With just a few days left for the April 11 Assembly and parliamentary polls in the state, Sikkim is witnessing rampant electioneering. A number of regional parties are taking on the Sikkim Democratic Front or SDF in these elections to end its 25-year rule. Anti-incumbency has reached its maximum right now. And the good thing about many parties coming out is the resentment of the people of Sikkim against this 25-year-old party. But if you look at the records of election and voting which has happened, the Sikkimese people are basically, let's say, they are not stupid, they're quite intelligent. And what they do is they vote for one party who might get Chamling down. And that has been the trend for the last 4 elections. All our trends have shown till now. This time also I too believe that the people of Sikkim will choose one party among all of us. And that will be us. The biggest challenge so far is because it's a huge empire being created and mostly because of money and muscle and that fear. So now the challenge for us is to remove that fear and that power of money on people. There are opposition parties, but I think now people are looking at credible opposition party, and that's what Hamro Sikkim brings in, a credible, clean, good young party plus good young people with credible image and with no baggage of corruption and criminal, and that is what people of Sikkim are looking. Sikkim is ranking at the number 1 in case of suicide. So unless and until we don't have major reformation in education system, like what I feel is 20% of the state, the economy, the money is being directed in education system, which they say is world-class education. But no, what's the outcome of that education? While the main opposition, Sikkim Krantikari Morcha or SKM, has decided to go it alone after a failed attempt by the BJP to forge an alliance with it, 4 other parties have come together to go to the polls together. सिक्किम का मेजॉरिटी पीपल चेंज के लिए तैयार है, इसलिए पब्लिक के मन में, पब्लिक के मैंडेट में हमको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि छोटा स्टेट है, छोटा स्टेट होने के कारण पवन चामलिंग 25 वर्ष सरकार चलाया, एकदम एक डिक्टेटर गवर्नमेंट चलाया, एक डिक्टेटर टाइप का गवर्नमेंट चलाया कि जनता को उसने सिर्फ त्रास दिया, अगर हमको वोट नहीं डालेगा तो हमको विक्टिमाइज करेगा, प्रमोशन नहीं देगा, ये विकास नहीं देगा, वो विकास नहीं देगा। जनता के मन में एक डर है, वो डर हटाना हमारे लिए चैलेंज था। अभी तक वो डर हमने बहुत ज़्यादा हटा भी चुके हैं जनता के मन से, अभी भी थोड़ा हटाना है, बस यही एक चैलेंज है। एक तो हम चाहते थे कि सिक्किम में जो भी अपोजिशन वोट हो, जो भी एंटी चामलिंग अथवा चामलिंग गवर्नमेंट का एंटी वोट हो, वो कहीं दूसरा जगह न एक ही जगह पर आए ताकि चुनाव जीतने में आसान हो जाए। ये भी एक कारण हम देख रहे थे। दूसरा कारण, कल हम सरकार बनाने से भी केंद्र में जो भी सरकार हो, सिक्किम छोटा है इसलिए फाइनेंशियल सपोर्ट और जो सेंट्रल सब्जेक्ट है, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स स्टेट का जो सेंट्रल सब्जेक्ट है वो पूरा करने के लिए सेंटर से एक हमको सहयोग चाहिए। इसलिए हम लोग बीजेपी से संबंध रख के गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाह रहे थे। बातचीत भी हमारा अच्छा हुआ था, पर क्या है कि सिक्किम का जनता इसके लिए अभी तैयार नहीं था। इसी टाइम पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिटीजन अमेंडमेंट बिल लेके आया पार्लियामेंट में, नॉर्थ ईस्ट में इसका बहुत विरोध हो रहा है, सिक्किम में भी विरोध हो रहा है। अगर ये सचमुच में ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019 इम्प्लीमेंट हो गया, सिक्किम में भी एक्सटेंड हो गया, तो ये स्टेट के लिए ठीक नहीं है। ये तो हम भी जानते हैं, पब्लिक लिए भी जानते हैं। Many voters in the state, particularly in the urban areas, were seen to be supportive of a change in regime. पैसे में नहीं होगा इसका, मैडम जी, पैसे में नहीं होगा, नहीं चलेगा पैसे में, चेंजेस करना चाहिए, चेंजेस होना चाहिए हम लोग, पैसे नहीं चाहिए। यहाँ पर अभी तो टक्कर है दोनों में, यहाँ पर कोई नहीं बोलता है, किसी को भी नहीं बोलता है, पूछता भी नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग पर चल नहीं बोले आकर क्या हो गया उसमें नहीं जानते। लोकल लोग खेलते हैं आप ऑर्गेनिक नहीं बेचता, हम लोग नहीं, आप नहीं बेचता, क्यों नहीं बेचता भैया? पैसा ज़्यादा है उसका, बिकता कम है। पैसा भी ज़्यादा है, सामान जीतना भी है ना, आज रख लेगा कल से बिगड़ जाएगा, वो फेंकना पड़ेगा। वो अपने आप आके खुद लगाता है ना, वो एक पार्टी का आता है लगाता है, दूसरा पार्टी का आता है लगाता है, ऐसे लगा के जाता है, जैसे आज रात कर लिए आपको पैसे देगा। But SDF seems to be confident of its return to power. 5-term Chief Minister Pawan Kumar Chamling is embarking on an aggressive campaign to hold on to his bastion.
Sikkim Democratic Front Party is the largest and the most cadre-based party in the state. Okay? It is, we have cadres right down deep into the villages of Sikkim. We faced last year, in 2014, we learned a big lesson when we lost 10 seats. And therefore, and that time we were already 4 years in, so anti-incumbency was big at that time as well. But we were not as prepared as we are now. A large section of the youth, especially first-time voters, are with us. We have a convicted person as the leader of that party. Now, what more can people think of when you have a convict, and a convict for what? For having done all the things which politicians are accused of, but this guy got caught. Worried about election results? Don't worry. India has had 10 governments, 6 of which have been coalitions, and stock markets have risen. Elections don't matter. Log on to quantumamc.com to know more. Quantum Mutual Fund. Investor first. Hamesha. Mutual fund investments are subject to market risk. Please read all scheme-related documents carefully.